बट सिर्फ ये बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी कमाओ से नहीं होगी। एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी इकोनॉमी का, जो केयर इकोनॉमी है। बहुत सारे ऐसे कल्चरल हिंड्रेंसेस भी होते हैं जो आपको काम नहीं करने देते। So politics is a very major part of our society today. I agree with what you're saying, but politics alone is not a enabler. राजस्थान संवाद में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसे कि हम कई मुद्दों पर विशेषज्ञों को लेकर आते हैं और बहुत अहम मुद्दों पर बातचीत करना और उन्हें अवेयर करना राजस्थान संवाद का एक कर्तव्य भी है। और इस मुहिम के तहत आज हम फिकी फ्लो से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसले पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इक्वालिटी की जब बात आती है, समानता की जब बात आती है, तो एक प्रश्न जरूर उठता है। महिला सशक्तिकरण बोला बहुत जाता है, लेकिन उन महिलाओं का क्या जो होम मेकर्स, हाउस वाइफ्स, केयर गिवर्स इन नामों के अंडर गिनी जाती है? क्या उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में नहीं होना चाहिए? क्या उन्हें मुख्यधारा में नहीं आना चाहिए? इस मसले पर बातचीत बहुत हुई, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। और वो काम कैसे होगा, इस पर बातचीत होना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत अहम कदम उठाए जाने बहुत जरूरी हैं। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ विकी फ्लो के प्रेसिडेंट सुधा शिव कुमार मैम मौजूद हैं, और साथ ही मेरे साथ आरती मैम भी मौजूद हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है सुधा मैम। क्या लगता है आपको, किस तरह के इंसेंटिव से, किस तरह से की प्रक्रियाओं से ये संभव हो सकता है? हाउ वुड यू मेक दिस पॉसिबल, and how would government make this possible that housewives and caregivers can also come in the GDP? Thanks so much for having me on your conversation. It's my pleasure and honor. Um, Before I begin, I would like to say that our demography has 50% women and 50% men. And very interestingly, women contribute to the workforce only to about 10 to 12% maximum. So the balance of women are either employed at home or they're not reckoned in the statistics of being a employed woman or being a working woman. So that difference is what the care economy is about. It has unpaid care quotient to it and a paid care quotient to it. So to answer your question, how will they be inclusive in reckoning to the GDP? My answer is twofold. One, if we can assign a number to the value the unpaid care woman is giving in the house, that translates to roughly about 12 to 17% of GDP. If you get more women to workforce, that means there's more money in the hands of the family and the family spends more money. That increases consumerism to another 17 to 19%. So on one side, you're quantifying an earning. On another side, you're quantifying a spend. So the growth to the GDP is between these two. So can I attribute it directly to saying if my GDP is X, it will become Y if this is this is considered? No, it's a complicated process. It's a process where everything has to be reckoned. And at the moment, we are at scratching the top layer of the whole story. But there is definitely a huge addition to the GDP if we look at the role the woman plays in the economy. Great, ma'am. And I would also like to urge that many of our viewers are, comfortable in listening to Hindi content as well. So, अगर आप दोनों में से कोई भी अगले सवाल का जवाब हिंदी में भी दे पाए, तो एक Yes. बहुत बड़ा Aarti, can you just explain the whole process in Hindi? या वारुण जी, देखिए, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी और पूरी गवर्नमेंट सरकार और हम सब आजकल ये एजेंडा पे बात कर रहे हैं कि विमेन लेड डेवलपमेंट होना चाहिए भारत का, राइट। आज कॉरपोरेट से लेकर गवर्नमेंट से लेकर सब लोग ये बात कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को वर्कफोर्स में ज्वाइन करना चाहिए। बट सिर्फ ये बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी कमाओ से नहीं होगी। एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी इकोनॉमी का, जो केयर इकोनॉमी है,
उसको, उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व करने की जरूरत है। एंड जब तक ये सॉल्व नहीं होगी तो महिलाएं वर्कफोर्स ज्वाइन नहीं कर पाएंगी। अब इस केयर इकोनॉमी में दो एस्पेक्ट्स हैं। एक है अनपेड अनपेड केयर, वो केयर, वो एक्टिविटीज और सर्विसेज जो ज्यादातर देशों में और स्पेशली भारत में महिलाएं दे रही हैं, या बच्चे पालने की केयर, बड़ों की देखभाल, किसी को किसी की सेवा करना बीमारी में, बच्चों की पढ़ाई या घर का काम, ये सब काम जो महिलाएं घर बैठ के कर रही हैं, एंड ये एजुकेटेड महिलाएं हो सकती हैं, राइट, जो जिन्होंने कॉन्शियस कॉल लिया है कि मैं एक होम मेकर बनूंगी। ये है पार्ट अनपेड केयर का। एक, हमें उनकी मुश्किलों को सॉल्व करने की जरूरत है। दूसरा पार्ट है पेड केयर वर्क। ये है नर्सेस, टीचर्स, आपके घर जो काम वाली आती हैं, ये भी जो पूरा सेक्टर है, जो पेड केयर वर्क का भी सेक्टर है, जो ज्यादातर महिलाओं को एम्प्लॉय करता है, इस ये भी बहुत ही फ्रैगमेंटेड है। अभी तक इसमें ना आपको पीपीएफ मिलता है, ना आपको इंश्योरेंस मिलता है, जो बाकी सब सेक्टर्स में जो काम करते हैं उनको जरूर मिलता है। तो ये जब तक सॉल्व नहीं होगा तो विमेन लेड डेवलपमेंट का एजेंडा आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जब तक ये सॉल्व नहीं होगा बहुत सारी सोशल, इकोनॉमिक और अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आएगी हमारी कंट्री में, जो डिफिकल्ट हो जाएगी सॉल्व करने के लिए। राइट मैम, जिस तरह से सुधा मैम, आप लॉयर हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर भी है बाय प्रोफेशन, आपने 32 साल का एक बहुत लंबा अनुभवी करियर जो है वो बिताया है। आप बढ़िया पढ़ पाई, स्टेट टॉपर थी आप अपनी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज में, गोल्ड मेडलिस्ट आप रह पाई। लेकिन जहां से हम आते हैं, राजस्थान का इलाका है, यहाँ हर महिला को उतना प्रिविलेज नहीं मिल पा रहा। ना वो पढ़, बहुत सारी महिलाएं जो पढ़ाई भी नहीं कर पा रही, प्रोफेशन में जाना तो बहुत दूर की बात है। बहुत सारे ऐसे कल्चरल हिंड्रेंसेस भी होते हैं जो आपको काम नहीं करने देते। ऐसे में यू एंड अप बीइंग अ हाउसवाइफ, दे एंड अप बीइंग अ हाउसवाइफ, और समटाइम्स बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उन्हें केयर गिविंग का भी काम करना होता है। ऐसे में उन्हें बिल्कुल आखिरी सेगमेंट पे रख दिया जाता है, एकदम नो, उनको किसी भी तरह की तवज्जो नहीं दी जाती। गवर्नमेंट तो बहुत दूर की बात है, जो छोटे छोटे उनके राइट्स होते हैं उनको भी उन्हें कभी एक्सरसाइज नहीं करने दिया जाता। ऐसे में क्या सिर्फ गवर्नमेंट ही ये काम कर पाएगी, या फिर इस काम को करने के लिए समाज के दूसरे तबकों को भी आगे आना होगा? और ये मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए गवर्नमेंट के अलावा और क्या क्या कुछ चीजें करनी होगी? बिकॉज अवेयरनेस भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। उसके अलावा जैसे फिकी फ्लो आगे आया है, और कितने लोगों को आगे आना चाहिए इस मिशन को सिर्फ बातों के बाद एक्शन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? See, I'll draw a small example to you. Um, when uh, when all this online payment processes came, people said internet will never reach villages. Today, even a small payment is done through UPI payment, Google Pay, any online payment. How did that reach the smallest woman in the farm? How did it reach your plumber, your carpenter, right down up to the villages? So there is a change in perception. Whatever you're saying is 100% true. But are we going to be staying there? No, we are moving. So this UPI payment is a small example to tell you that things are changing. Things are, it's very, easy for me to say we are in a digitized world, we are technology driven, they're all jargons. But in real terms, UPI is a solid example of how that digitization and technology transfer happen. In the same way, there are many things that this woman in a remote village who is a housewife can be enabled. So that is why organizations like us are working. We are working in more than 45, 50 villages now, and we plan to expand that base. What we also need to do is sensitize them about government schemes. There are lots of schemes that the government is giving, a lot of scheme for the woman in the village to enable her. And these schemes must reach the woman. So we work as a catalyst there
to make them understand. We are also opening centers of excellence in many places. It's a free course where they can come and learn and teach. For example, a lady making papad or masala is very common in a village where a household enterprise begins, either a pickle or a papad or a masala. So they are just confined to a certain small market. What we are trying to do is see, unless a woman is financially empowered, any other kind of empowerment is a far fetch. If I know I can make 10,000 rupees a month, I'll go towards it. So in these kind of things, there has to be a push, there has to be a pull. Finance is a great push. So what we are also doing is we're signing up with organizations like ONDC. We are signing up with marketplace environments which go right down to the village. So, and we teach them how to do it. We teach them to expand their lives. We're having mentorship programs. They all sound like large words, but in reality, in Arunachal Pradesh, we have touched the lowest village with connectivity to market. Unless connectivity to market happens, these schemes fail. So SHGs, government schemes, enablers like Fiki Flow, there has to be vehicles. Let me also quote, why am I using the word vehicle? Earlier days, there was no connectivity to villages, even physical connectivity. Cycles were most popular. Now every village is connected to the next village, to the next town, to the next larger municipality, both physically, digitally, and there is movement. Geography between two villages is now seamless. This will help the movement, sir. We are like the vehicles. These mentors, all that I said, are like the vehicles. Like how the cycle moved to an auto rickshaw, moved to a bus, moved to a four-wheeler which transports people. Organizations like us, we are the vehicles that help this transformation. Very true, so ma'am, a point taken. But the thing is, when we are talking about inclusion of the caregivers in the economy and in the GDP, then we should recognize this thing that caregivers and women caregivers, I think they are one of the point of women empowerment. But women empowerment की जहां पर बात की जाती है मैम, पॉलिटिकल विल उसके लिए बहुत होना जरूरी है। और ये एक सच्चाई है कि भले ही सरकार कहती हो 30% हम विमेन्स को देंगे रिजर्वेशन की, सरकार में भी उतना पार्टिसिपेशन है, लेकिन आज ग्राउंड पे सच्चाई ये है कि वो नहीं। इफ आई टॉक अबाउट ऑल द इलेक्शंस, no 30% is given to women as of now. जब तक डिसीजन मेकर्स विमेन नहीं होंगी, वो केयर गिवर्स या फिर और भी जो डिसीजंस है जो विमेन्स के हक में होने हैं, वो कैसे करवाएंगे? क्या लगता है आपको, पॉलिटिकल विल होना कितना जरूरी है, और उस विल को करने के लिए पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स विमेन के होना कितना जरूरी है? So politics is a very major part of our society today. I agree with what you're saying, but politics alone is not an enabler. In many places, there are corporates, there are NGOs, there are large CSR providers who are there to take these schemes forward. Now, there are two ways of looking at it, sir. One is to say, what are all the problems that are there in the system? The problems are real, I agree with you. But the second part is to say, how do we overcome these problems? Are we overcoming? Are we in the right path? Are we overcoming these problems through another provider? Are we going on are we going on a movement, or are we stagnant? If you ask me that question, I will tell you, even if there are laggards in the system, even if you're having stones in your legs and you're not able to walk, we are taking baby steps forward. We are going forward. Maybe not in the pace that we would like it to be, but we are definitely moving forward, which is why I'm repeating, which is why vehicles like us are very, very important in carrying this message forward. All of us are moving, sir. Some of us are moving, some vehicles are moving like a cycle, some vehicles are moving like a car, and some are even faster. So unless all of them go together, the change that we want will not happen soon.
So we are at a stage across country in India, all of us are moving at some pace. Is that pace enough? Is for each one of us to understand. Am I going to say my government is not moving me and so am I going to sit at home mopping? No. It is how much your mindset is, how much your will is. If my will is strong enough, even if I'm in the remotest of Ladakh, I'll move and get what I want to do. So, end of the day, the woman is a strong force. She cannot be bottled by a system. So, once that mindset, if we help that woman's mindset, then sky is the limit for that woman, sir. वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन मैम, इस पूरी मुहिम के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि इसकी अवेयरनेस कितनी लार्जर इम्पैक्ट में की जाए, कितना बड़े स्केल पर इसकी अवेयरनेस की जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है एक सीईओ अगर कंपनी अच्छी तरह से चला पा रहा है, एक सांसद विधायक अगर पॉलिटिक्स अच्छी तरह से कर पा रहा है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा सत्य यह है कि उसका घर ढंग से चल रहा है, तब वो बाहर जाके काम कर पा रहा है। और वो घर ढंग से चलने के पीछे या तो कोई हाउसवाइफ होगी या कोई केयर गिवर होगी, ये समझना बहुत जरूरी है। और इस चीज को समझाने के लिए, बताने के लिए अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। तो इस पूरे मिशन में अवेयरनेस अभी कहां तक पहुंची है, कितना और बाकी है, और क्या लगता है आपको इस अवेयरनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ काम और होने जरूरी है? Yes, sir. That's a very nice question, because unless awareness is there, my mindset is not going to change. But where are we on that awareness quotient? We are working very hard. Awareness is high in some cities, some villages. Awareness is low in some cities, some villages. Awareness is very high in the metros, not so high in tier 2, tier 3. This is true of anything. This is true of any, if you talk of AI and machine learning, it's very high in metros, not so high in with a woman in the smallest of the villages. But this awareness, see, I'll again quote another example, sir. There were days when we never had electricity. There were days where villages used lanterns. So awareness of an electricity was a fast story. But over a period, the villages are enabled with electricity. There are still villages in the dark. Does it mean that that village is never going to grow? No, it is taking that much time. Electrification is a project that many CSR companies are doing because that village is in the dark. Even in today's 21st century, where we are talking of technology, electricity hasn't reached some villages. I'm sure you'll agree with that. Like that, this awareness is also happening. Now, how long will it take for that penetration is dependent on several factors. It depends on the culture of that village. I'm talking of the bottommost. It depends on the education that's available in the village. It depends on connectivity, how aware. I need to see something to be aware. I need to hear news. How aware is the connectivity happening in that village? How is the political fabric of that village? How is the man in that village? Is he an enabling man? How is the societal setup of that village? Everything matters. So that is proportionate to awareness. How much ever, if I have a closed mind, how much ever I try and push, electricity will never come to the village. So that is a parallel example I'd like to draw to you. Sudaji, can I add something over here? Like Yes, basically, please. Varun, ये बहुत ही जो केयर इकोनॉमी का टॉपिक है, बहुत ही नया टॉपिक है, राइट? ना ही भारत में पर दुनिया भर में। इनफैक्ट ये इटली में पहली बार मेंशन किया जब इटली अपना G20 होस्ट कर रही थी कि हमको इसके बारे में सोचना शुरू करना चाहिए। फिक्की फ्लो जैसा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम क्योंकि 40 साल से महिला सशक्तिकरण के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी तरफ काम कर रहे हैं, हमें पता है कि अगर महिलाओं को आगे ले जाना है, राइट, तो ये टॉपिक, ये एक फ्यूचरिस्टिक टॉपिक है जिसका सोल्यूशन की जरूरत है महिलाओं को एक पुश देने के लिए। हम अभी तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बात कर चुके हैं, पर अगर हम लोग को महिलाओं को वर्कफोर्स में लाना है,
तो हमको ये केयर इकोनॉमी का एजेंडा पुश करने की बहुत बहुत जरूरत है। एंड आपका जो पहला वाला सवाल था कि क्या सिर्फ ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जैसे सुधा जी ने भी बोला, ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशंस, हम जैसी ऑर्गेनाइजेशंस, की फ्लो जो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। ये कॉरपोरेट्स की जिम्मेदारी है जो महिलाओं को एम्प्लॉय करना चाहती है, क्योंकि आज ये इनफ डेटा है दुनिया भर में कि एक कॉरपोरेट को सक्सेसफुल होने के लिए आदमी और औरत, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन जो टॉपिक है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जब डाइवर्सिटी आती है तो एक कॉरपोरेट का प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि महिलाएं कंपनियों में ज्वाइन करें, काम करें, तो ये केयर इकोनॉमी सॉल्व करना जरूरी है। ये मुद्दे पे और भी जरूरी है कि घर की पूरी फैमिलीज हैं वो भी सोचे इसके बारे में, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे फैमिलीज न्यूक्लियर होती जाएगी, जो एक बड़ा टॉपिक है आजकल, राइट? पहले हम सब साथ में रहते थे, दादा दादी लोग बच्चों का ध्यान रखते थे, ताऊ बुआ लोग सब देखते थे, घर का ध्यान रखते थे, तो अगर किसी महिला को काम करने की जरूरत होती थी तो बाहर जाके कर पाती थी। बट आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज का जमाना आ गया है, राइट? तो ये हमारा जो सोशल फैब्रिक है कंट्री का, वो भी चेंज हो रहा है। तो केयर इकोनॉमी इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट फॉर द गवर्नमेंट, but it's subject for organizations, chamber of commerce like Fiki Flow, for NGOs, for corporates, and for every individual family to think about. बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने। कुछ बदलाव लाना हो तो सबको साथ आना पड़ेगा, सिर्फ सरकार के बस की बात नहीं है। ऑर्गेनाइजेशंस को आगे आना पड़ेगा, कंपनीज को आगे आना पड़ेगा। और जैसा कि सुधा मैम ने कोट किया कि संभव नहीं था सब कुछ यूपीआई से होना, लेकिन आज गांव गांव तक हो रहा है, तो चेंज हो सकता है। ऑप्टिमिस्टिक सोच लानी जरूरी है, और वो ऑप्टिमिस्टिक सोच होगी तो सब कुछ बदलेगा। और बदलाव की शुरुआत भी होनी जरूरी है, जो आज फिकी फ्लो ने कहीं ना कहीं कर दी है। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, ताकि इस बदलाव की शुरुआत जो आपने की, हम भी उसका एक छोटा सा हिस्सा बन पाए, और इस अवेयरनेस को और आगे ले जाकर कहीं ना कहीं इस चेंज को लाकर भारत को भी और आगे बढ़ा पाएंगे। थैंक यू सो मच आरती मैम, सुधा मैम, थैंक यू सो मच। Thanks Thank so you. much. Thanks so much.